Hi guys, welcome to my YouTube channel. Here I am again to help you guys with the important tips and insights of the legal profession. So this is a continuation of my drafting series. Part 1 was uploaded earlier wherein we discussed about the preliminary things which go into the draft like the memo of parties, synopsis, list of dates. Today we'll be discussing about the main draft like the entire set of your petition and what are the essentials while drafting a suit, plaint or petition. So yes, let's get started. So guys, we discussed about the nomenclature of the draft, wherein you mention about the court, the petitioner and respondent name like X versus Y. So what goes into the caption of the suit or petition? What goes into the title of the petition? So let's take an example of Section 9 petition under Arbitration and Conciliation Act only, because this is what I took in the last part also. So what goes inside the title or the caption of that petition? So it will be like a petition under Section 9 of the Arbitration and Conciliation Act on behalf of the petitioner seeking interim reliefs from the court. So after the title, you write most respectfully show it. And then in the first paragraph, you basically tell the court, like, why are you here before the court? So you will say that the petitioner has filed the caption petition under Section 9 of the Arbitration and Conciliation Act seeking such and such reliefs from the respondent. And yes, so that will go in the first paragraph of your draft. So your interim relief could be in a Section 9, which is a basic relief, is to stay from is to get a stay from the court on the invocation of the bank guarantees, right? So the next part would be the introduction of your parties. So guys, it's very important to introduce your parties in the petition, and so that the court understands like who the petitioner is, who the respondents are. So basically in the next paragraph about the introduction of your parties, you write that the petitioner is, supposedly it's a company, so you write the petitioner X, the name of the company, having registered address as such and such, having a corporate identification number as such and such. So you get these details about the company from the master data of the company, which is uploaded on MCA. So you write such details about the company and your petitioner basically, and what does your petitioner do? So let's say it's a company. So what does that company does, like what's the primary business of that company? You just write in the introduction of parties. Then you can probably annex a document, let's say the master data of the company or the memorandum of association or the articles of association of that company, to give the court a generic idea about that company. And the same exercise goes for the respondents also. So if there's one respondent or two respondent, you introduce the respondents as well. So what is the name of the respondent, then their address, of course their SIN number, and yeah, what their business is. So that's about the introduction of the party, so that the court knows कि कौन उसके पास में आया हुआ है. So the next step, which is the most important step, is like basic facts of that case. So guys, before drafting anything, you need to be clear about the transaction, like what in commercial cases, mostly we need to be careful about what the transaction was and what the client actually wants to seek out of that transaction. So let's say there was a transaction wherein a commercial contract was entered into the party, between the parties, and then there were certain conditions. किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में गाइज there are condition precedents जो कि कॉन्ट्रैक्ट की साइनिंग से पहले फुलफिल करनी होती है, एंड कंडीशन सब्सिक्वेंट जो कि कॉन्ट्रैक्ट के एंटर करने के बाद में आपको फुलफिल करनी होती है. So let's say there was a contract between the parties, and there were certain conditions subsequent to be fulfilled by the respondent or the defendants, and then they actually did not fulfill those conditions subsequent, and there's a breach on their part. So now you are here before the court seeking interim relief from the court. So इसके facts क्या होंगे essentially? आप जब भी dispute बता रहे हो तो आपको एक brief dispute के बारे में भी आपको court को बताना पड़ेगा. So आपको facts बहुत क्लियर और क्रिस्प मैनर में कोर्ट के सामने प्रेजेंट करने पड़ेंगे. सो फैक्ट्स में आप सबसे पहले क्या बता सकते हैं, विच इज द मेन अंडरलाइनिंग ट्रांजैक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट. सो अंडरलाइनिंग ट्रांजैक्शन में क्या होगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट, कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कब एग्जीक्यूट हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट किस बारे में था, एंड देन यू गो अबाउट द ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज. लेट्स से देयर वर कंडीशन सब्सिक्वेंट टू बी फुलफिल्ड ऑन द पार्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट. तो वो कंडीशन सब्सिक्वेंट कहाँ थी, कौन से क्लॉज में थी, क्या रिस्पोंडेंट को करना था, क्या उसकी ऑब्लिगेशंस थी. तो यू डिटेल आउट दोज ऑब्लिगेशंस in the next part, like
जो भी ट्रांजैक्शन थी आपने पहले उसको बता दिया फर्स्ट। नेक्स्ट आपने क्या बताना है कि उसके अराउंड उस रिस्पोंडेंट की क्या ऑब्लिगेशंस थी कॉन्ट्रैक्ट में, क्या कंडीशन सब्सिक्वेंट थी, तो वो आपको कैसे पता लगेंगी, अपने कॉन्ट्रैक्ट को रीड करके, कॉन्ट्रैक्ट के इंपॉर्टेंट क्लॉजेस निकाल कर, और उन क्लॉजेस को आपको अपनी पिटिशन में डाल देना है, क्योंकि उन क्लॉजेस से ही कोर्ट को समझ में आएगा कि क्या ब्रीच हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में। सो you have to write about the dispute in the brief facts of the case so that the court knows about the entire transaction. So let's say कि अब रिस्पोंडेंट ने कोई कंडीशन सब्सिक्वेंट थी जो उसने फुलफिल नहीं करी, उसकी वजह से आप प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं। सो देन यू विल राइट अबाउट व्हाट इज द डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज, कि आपने बोला कि अब हमने रिस्पोंडेंट को बहुत बारी नोटिस इशू करा to fulfill these condition subsequent in the contract, but there was no response from the respondent, or the respondent is adamant that he or it has fulfilled all the conditions, and now he just wants his payment. So let's say the payments are based on milestone basis कि वो condition subsequent fulfill होंगी तो आप payment कर देंगे respondent को, but now you can't pay because वो condition subsequent fulfill नहीं हुई है. So all these facts, detail by detail, step by step, you have to mention in your brief facts of the case. Now coming to the next part, the third part, कि आपको इस ब्रीच से हुआ क्या है, आपको कुछ लॉस हुआ है इस ब्रीच से, आपको कोई डैमेज हो रहा है, आपके पैसे लग रहे हैं, आपका ग्रीफ क्या है, बेसिकली दैट यू नीड टू मेंशन इन योर ड्राफ्ट इन द थर्ड पार्ट ऑफ इट. सो आपने डिस्प्यूट तो बता दिया, अब आपको हुआ क्या है उससे, लाइक यू आर सफरिंग सम लॉस आउट ऑफ दैट. सो बेसिकली आप अपना प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि उसने वो कंडीशन सब्सिक्वेंट नहीं फुलफिल करी है. नाउ यू आर नॉट एबल टू कंटिन्यू विद दैट प्रोजेक्ट, और आपके पास वो लैंड पड़ा हुआ है, उस पर आप कोई एसेट भी नहीं डाल सकते, तो दैट इज इनकरिंग लॉस फॉर यू. सो नाउ यू हैव टू प्ली बिफोर द कोर्ट, लाइक यू हैव टू पुट फोर्थ बिफोर द कोर्ट कि मुझे ये लॉसेस हो रहे हैं इस ट्रांजैक्शन के कंप्लीट ना होने से. सो गाइस, आपने अब कोर्ट को ये तो बता दिया कि डिस्प्यूट किस बारे में है, बट यू हैव टू लिंक द लॉ विद द फैक्ट्स ऑफ योर केस. इट इज वेरी एसेंशियल. सो इन अ सेक्शन 9 बिफोर द आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन एक्ट, आप क्या लॉ लेंगे? सो व्हाई विल द कोर्ट ग्रांट यू इंटरिम रिलीफ? यू हैव टू शो टू द कोर्ट दैट either there is a case of fraud which is being played by the opposite party, or there's a case of special equity and you are suffering irreparable damage because of that transaction, because of the fault of the respondent. So you have to show to the court कि भाई मतलब आपके साथ फ्रॉड प्ले कर दिया है दूसरी साइड ने, एंड नाउ यू आर बिफोर द कोर्ट कि अगर कोर्ट आपको इंटरिम रिलीफ नहीं देगा तो आपके साथ इतना बुरा हो जाएगा, इतना डैमेज ऑलरेडी हो चुका है, इतना और हो जाएगा. सो दैट इज व्हाट you have to link the law with the facts of your case. So besides this, there are certain other things which go into the draft towards the end. So limitation is very important. You have to tell to the court that your petition is within the limitation period. Territorial jurisdiction, you get the territorial jurisdiction from the contract itself, the courts which will have the power over your petition or suit. Then the pecuniary jurisdiction, like you have to evaluate your damage, and then if it's above 2 crores, then you can go to the Delhi High Court, otherwise you can go to the district courts. Apart from that, then you have to write that this petition is being made in bona fide and in the interest of justice, and if the reliefs are not granted, then there will be irreparable damage to the petitioner. The balance of convenience also lies in your favor, the prima facie case is in your favor. These are certain important liners which you have to write before seeking prayers before the court. So guys, अब बात करते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की आपके पूरे ड्राफ्ट में, कि आपकी पिटिशन में आप प्रेयर्स क्या सीख कर रहे हैं, रिलीफ्स क्या सीख कर रहे हैं कोर्ट से. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो आपकी प्रेयर में होता है उतना ही कोर्ट आपको दे सकती है, उससे कम ऑफ कोर्स दे सकती है, बट उससे ज़्यादा कभी नहीं दे सकती. यू हैव टू बी माइंडफुल वॉट एवर यू आर आस्किंग इन योर prayers while going before the court. So let's say it was a stay on the invocation of bank guarantees case under section 9. So what will you ask the court here? You will ask the court to direct the respondents not to invoke the bank guarantees till the matter is disposed of. You can ask the court to maintain the status quo on your bank guarantees till the arbitration proceedings are done with. You can ask the court to direct the respondents not to pay out any of the bank guarantees amount till the matter is completely decided. And of course, you can ask the court for ad interim reliefs or ex parte reliefs and any other such directions which you want to seek from the court.
So yes, this is the major part of your entire petition, and I hope this was helpful. Okay, so one more thing, guys. With your petition, there's also an affidavit from the authorized signatory of that particular company. If there's a authorized signatory from, if there's a company, so there will be authorized signatory on behalf of the company. If there's an individual, so affidavit of that personal person will only work. So you have to also annex an affidavit with the petition. सो गाइज, ये तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, पर एक और सवाल है कि आप अपनी पिटिशन में डॉक्यूमेंट्स भी तो एनेक्स करते हैं। सो आपको मेजर मेजर डॉक्यूमेंट्स भी अपने पिटिशन में एनेक्स करने होते हैं, तो उसका वे क्या होता है, उसे आप कैसे लिखते हैं? जो भी आपके पॉइंटर्स होते हैं वहीं पर ही आप कैसे लिखते हैं? अ ट्रू कॉपी of the, let's say it's a master data of the company, so a true copy of the master data of the company is annexed herewith and marked as document number 1 or annexure number 1. Let's say it's a contract between the parties. So how will you write it? A true copy of the contract dated such and such, executed between the parties, is annexed herewith and marked as document number 2. So let's say if you're annexing बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ में ही, एक ही पैराग्राफ में आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स एनेक्स करने हैं. लेट्स से देयर वाज अ लीगल नोटिस, देयर वाज अ रिप्लाई टू दैट लीगल नोटिस, एंड देन यू अगेन सेंट योर रिस्पॉन्स टू दैट लीगल नोटिस. आपने वो एक ही पैराग्राफ में लिखा है एंड यू वांट टू एनेक्स ऑल ऑफ दीज टुगेदर ओनली. सो हाउ विल यू राइट दिस? द ट्रू कॉपीज ऑफ द legal notice dated such and such, reply to the legal notice, and response sent by the petitioner to the respondent are annexed herewith and marked as document number, let's say 3, Collie. Collie means collectively. You are marking all these documents together. So yes, this is the way to go about with the documents. I've told you about the main petition. I've told you about the affidavit that goes along with it, and I've told you about the documents. So the rest of the part we'll be doing in the next series. I hope you stay connected, and I hope this was helpful. Let me know in the comments below. Please subscribe to this channel, and I hope you liked it. Bye.